Hello students, welcome to Justtutors. How are you? How are you? I hope you are doing great and you must be taking care of yourself. Okay, so कल हमने जो हमारा टॉपिक था वो बायोलॉजी का था. आज जो हमारा टॉपिक है ये है अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स. होल नंबर्स तो वैसे हमने पिछले टॉपिक्स में देखे ही थे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना. असल में होल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज़. ओके, अच्छा, तो जो हम जब नंबर्स को ऐड करते हैं, जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जब नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर रहता है उन नंबर्स का, उसको हम कहते हैं होल नंबर की प्रॉपर्टीज़. ओके, ओके, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके, इसकी जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है, एडिशन, you can say 1 add 2 equals 3. You can also say 2 add 1 equals 3. Okay, so just wait a minute. ओके, सो पहली हम प्रॉपर्टी देखते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. फर्स्ट लेट मी जस्ट क्लियर द पेज. It means when we add or subtract, sorry, not subtract, let me just erase it. Or multiply two whole numbers, the result is always another whole number. ओके, सो जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, तो रिज़ल्ट जो होता है हमेशा एक होल नंबर ही होता है. कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको. Let's add 7 add 5. 7 add 5 is 12. 7 is a whole number, 5 is a whole number, and 12 is also a whole number. Now let's multiply 7 and 5, and it is 35. 35 is also a whole number. So
ये एक प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। 1 add 2 equals 3, 1 multiplied by 2 equals 2। सो 2 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है, ये दोनों तो होल नंबर है ही। जब भी हम दो या दो से ज़्यादा होल नंबर्स को ऐड या मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, this is only dealing with multiplication and addition. Okay, so closure property applies only on it applies only on addition and multiplication. Okay, अगर हम बहुत छोटे होल नंबर्स लें, 0 add 1 equals 1, 0 multiplied by 1 equals 0, सो तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। बहुत बड़े होल नंबर्स ले लें, 1000 add 2000, तो भी ये 3000 होते हैं, जो कि एक ऑड होल नंबर है। और एक और लेते हैं, 1000 टाइम्स 2000, इट विल बी इक्वल टू 2 मिलियन, और ये भी एक होल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड करती है जब हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। कम्यूटेटिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या? ये बहुत एक सिंपल प्रॉपर्टी है जो आई गेस हम सबको ही पता होगी। एक सेकेंड, टू टाइम्स 3 क्या होता है? 6, और 3 टाइम्स 2 क्या होता है? ये भी 6। तो दोनों ही केस में 6 आ रहे हैं। अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आ रहे हैं, 3 को 2 से करें तो भी 6, यानी कि इट डजंट मैटर द ऑर्डर ऑफ द नंबर, लाइक द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, ऑर्डर बाय विच नंबर्स आर ऑपरेटेड। ऐसा नहीं है कि 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ रहा है, या 3 को 2 से करेंगे तो कुछ और है। ऐसा नहीं है, दोनों में केस में सेम आएगा। हाँ, एडिशन में भी यही है। 2 add 3 equals 5, 3 add 2 equals 5। ओके, एडिशन में ये हो गया। व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन? 3 take away 2 is 1, but is 2 take away 3 is 1? 3 minus 2 is 1। क्या 2 minus 3 1 होता है? नहीं। तो ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। ओके, सो ओके, ये भी सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करती है। थ्री take away 6 is -3, which is not a whole number. 6 take away 3 is 3, 3 which is a whole number. Okay, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। Okay, so this is associativity.
यानी कि a प्लस b प्लस सी इक्वल्स a प्लस बी इक्वल सी और a प्लस बी प्लस सी और सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इफ़ यू आर एडिंग थ्री नंबर्स, if you are adding three numbers, it doesn't matter whether you add two numbers first then the third number or first number first then the other two numbers. So the ऐसा मतलब आप चाहें a को, यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ, 17 add 3 add 2, अगर हम इसको 3 add 2 करते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 add 17 इज़ 22। बट अगर हम 17 को 3 में पहले ऐड कर देते हैं तो 20 हो जाएगा, 20 add 2 इज़ 22। तो मतलब ये है कि आप जो है नंबर्स को किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। If three numbers you are adding, you can either choose to add the first number with the two, then the sum of those two numbers to the third, or first to the third, then with the middle number. It doesn't matter, okay, whether we are adding with the first number or the second number. Similarly, with the multiplication, like a multiplied by b multiplied by c equals a multiplied by b multiplied by c. So इसका मतलब ये नहीं है जैसे a को मल्टीप्लाई करेंगे b से, b को c से, ऐसा नहीं है कि अगर a को b से पहले कर दिया और b से उसके बाद में c से किया तो हमारे आंसर में कुछ डिफरेंस आएगा। हम अगर तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, वी कैन आइदर मल्टीप्लाई एनी नंबर फर्स्ट, इट्स आवर चॉइस। सो वी कैन मल्टीप्लाई a by b first, then we multiply a times b by c, or we can multiply like again I am giving you an example regarding this. Let me give you an example. Okay, so 2 multiplied by 3 multiplied by 6, अगर हम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 6 होता है 12 18 और 2 टाइम्स 18 हो गया 36। लेकिन अगर हम पहले इन दोनों को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स 6 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 36। अगर हम पहले 2 टाइम्स 6 कर दें, 2 टाइम्स 6 कर दें तो होगा 12 टाइम्स 3 विच इज़ ऑल्सो 36। तो मतलब whether you multiply 2 by 3 first or 2 by 6 first or 6 by 3 first, it doesn't matter. Okay, answer will also always remain the same, no matter whether we multiply first number by the second number or second number by the third number or third number by the first number. Okay, so it will not matter. So this is the property which is called associativity, and this property applies to also addition and multiplication. अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। लेट मी जस्ट इरेज इट फर्स्ट। Okay. Distributivity. ओके, ये जो प्रॉपर्टी है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है
क्योंकि अभी तक हमने जो देखा ये तो काफ़ी क्लियर था, ऑब्वियस था, लेकिन इस प्रॉपर्टी में हम कुछ नया सीखने को आ रहे हैं। ओके, सो लेट मी स्टार्ट। सो suppose we are adding 13 add 6 and we want to multiply the sum by 2. Let's see what will happen. 13 add 6, what is 13 add 6? It is 19. 19 times 2 equals 38. What we can do, if like because this calculation is very easy because I have taken the example. What if the numbers were little complex to multiply or add? We can just take this 2 and distribute the multiplication in the brackets. So what will happen? 13 times 2 add 6 times 2, and it will be 30 times 2 is 26, 6 times 2 is 12, 26 as 12 is 38. So what we are seeing that if you are multiplying something by an addition calculation, then you can either multiply that number with the with each number, then add. Okay, let me just tell you one more example. Suppose 2 add 15 add 16 add 3 add 7 multiplied by 3. Okay, हम क्या कर सकते हैं? We can either add all of these together first. So 2 add 15 is 17, 17 add 16 is 33, 33 add 3 is 36, 36 add 7 is 43. So it becomes 43 times 3, which means it is equal to 129. Okay, so because 40 times 3 is 120 and 3 times 3 is 9, that is why 129. What if we first multiply this 3 by each of these numbers, then multiply, then add? So 2 times 3 add 15 times 3 add 16 times 3 add 3 times 3 add 7 times 3. अब 2 times 3 क्या होता है? ये मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ. 2 times 3 is 6, 15 times 3 is 45, 16 times 3 is 48, 3 times 3 is 9, 7 times 3 is 21. 6 add 45 is 51, 51 add 48 is, okay, let's just write it, then we will add it, we are not in a hurry. And 9 add 21 is 30, 51 add 30 is 81, add 48, which is equals to 129. You can see the answer is again the same. So this is the property, we call it distributivity. We are distributing the multiplication onto others. Okay, ओके, अब हम देखते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. And this is nothing, this is really simple. Any whole number, let's
I'm sorry. Okay. Suppose w is a whole number, and if we add 0 in that number, we will get w. I'm sorry. If we add 0 in a whole number, the answer will always be the same number. And if we multiply this whole number by 0, it will always be 0. If we multiply it by 1, it will always be w. Okay. So अगर हम 5 add 0 करें, which will be 5. 5 multiply करें 0 से, so 0. और 5 times 1 कर दें तो भी 5. So identity property है ये. This was pretty simple. So because this is really fundamental property, ये तो शायद सबको ही पता होगी. ओके. सो अब हम इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी. So we have majorly seen all the properties. Like let's see some examples. इसको सॉल्व करिए. Okay, so how can we solve this one? So 2 times 3 add 7. Okay, now इस यहाँ पे ब्रैकेट्स भी हैं और एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है. सो हमने एक प्रॉपर्टी, वी हैव studied about one property which is bid mass or bod mass. So first what we solve in such cases, first we solve the numbers which are inside the bracket. Okay, because there are two brackets, so we will individually solve both the brackets. So 2 times 3 add 7. What is 3 add 7? It is 10. Add 3. What is inside the bracket? 5 minus 4, which is 1. Now the brackets are solved because we have one whole number in the bracket, both the brackets. Okay, that means 2 times 10, which is 20. 3 times 1, which is 1. 20 add 3 is 23. So first you have to see how to approach a question. If we have brackets, solve the brackets. If we have addition, if we have brackets, solve the bracket. If we have indices or power, we will talk about that later, but you have to understand that there is a process of solving the questions, and that process must be followed.
Now let us see another example. अब ये एक कॉम्प्लेक्स सा सिचुएशन आ गया हमारे पास. अब इसको हम देखना है कि पहले हम ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या क्या करें. इस तरीके के क्वेश्चंस you must have seen these kind of questions as termed as tricky questions on Instagram. They like people who are not really into maths, like who don't really know how to deal with these kind of questions, who think, who have not like learned the way to do these questions. They think that they are pretty tough or pretty hard to do, but I will tell you, we have to just follow Bidma's rule. Because there are no brackets in this question, we are going to leave that. We have no powers of any kind of thing, we are going to leave that. Then comes division. We don't have any division symbol in this calculation, we are going to leave that. Then comes multiplication. So can you see some numbers multiplied in this? Yes, we can. So first we are going to multiply these two numbers. What is 5 times 4? What is 6 times 3? And it is 18. Let me remove this. Now what? Let's just add, because now we are going to add. 2 add 3 is okay. 6 add 18 is 24. 24 take away 20 equals 4. So we have to follow the rules of calculation. Okay, if we are not going to follow the rules of calculation, then we are going to have errors. So to skip the errors, we have to follow the rules. Okay, now let me discuss one more kind of a question, which is division. ऐसा it is possible that when you divide a whole number by another whole number, the answer is still a whole number. It is possible, but it is not always possible. Let me tell you why. 10 is a whole number. If we divide 10 by 2, we get 5. 10, which is a whole number, divided by 2, which is a whole number, we get 5, which is also a whole number. Okay, so we are getting whole number. But if we divide 10 by 3, we are going to get 3.3333333 and so on. So that means it's not always the case. So when you divide a whole number by another whole number, the answer may be or may not be a whole number. In this case, it is an irrational number, because 3.33333 is an irrational number, and it is not even an integer. One more thing, if we like, okay, division is done.
7 divided by 2. ओके, अब इसमें हमें देखना है कि किस किस पार्ट में जो आंसर होगा वो एक होल नंबर होगा या नहीं होगा. 7 divided by 2. It's really easy to see. So do we have 7 in 2 times table? Okay, so because we don't have 7 in 2 times table, we can say the answer is not going to be a whole number, because 2 times table is like 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4. So it is always a whole number that with which we are multiplying. So 2 times 7 divided by 7, in this case, yes, in this case it will be a whole number, in this case also, in this case also, in this case also, in this case also. Okay, so that is why these are not the whole numbers in these cases. Okay, for the homework, में आपको justtutors.com की वेबसाइट पर जाना है. उसमें एग्जाम प्लस सॉल्यूशंस हैं, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. आपको होल नंबर्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाय योरसेल्फ. ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, एंड you need to, if you have a book, okay, just follow that book. You can take the help of that book and solve the questions of that book. Okay, so whole numbers का कोई ऐसा कोई ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन it is really important. Okay, so इस टाइम जो आपका क्लास है, यानी कि 6th class, 7th class, 8th class, these are the very important years of your education, because lot of people tend to have a lot of doubts in each of these classes. So if you cannot rectify your doubts at this time of your life, okay, then it is going to make a huge impact in your career, in for various exams, for various entrance exams. Okay, that is why you can for this one you need to be really focused on whatever you are doing. Okay, so that is why I am asking you to be really focused. Okay, so I hope you enjoyed today's session. It was about whole numbers and all. Now let me tell you where you should be looking for your homework. You just need to type just tutors, search on Google, and that's it. The first result will be the result that you are looking for, that is our website, just tutors. Okay, so with the help of this website you can access free study material, package, and worksheets. So let's see what we have in the free study material. Okay, we have maths, science, we have a lot of, we even for US we have IGCSE, we have CBSE and ICSE. So this is for the maths class. Let's say we are looking for the class 6th. ओके, सो जिसकी हम बात कर रहे थे वो ये है होल नंबर्स.
इस टॉपिक को आप देख सकते हैं इसके थ्रू। सो हमारे पास इंट्रोडक्शन टू होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़, पैटर्न्स, हमने जो जो पढ़ा है अभी वो भी होगा इसमें, बाकी सब होगा। इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, मॉक मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, एग्जांपल्स भी होंगे, ठीक है ना। ये सब आपको इसमें अगर आप देख सकते हैं तो देखें, और यही आपका होमवर्क भी है। और एक और चीज़, आप जितना ज़्यादा हमारी लाइव स्ट्रीम्स देखेंगे हम उतना ही अच्छा ज़्यादा कोशिश करेंगे अपने लाइव स्ट्रीम्स को अच्छा बनाने के लिए, अपने कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए। और हम क्योंकि वी आर डूइंग दिस फॉर द सोसाइटी, ओके, सो बिकॉज इसीलिए आपको ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि एक यूट्यूब चैनल है जस्ट ट्यूटर्स नाम का, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव वीडियोज़ आते हैं रोज़ाना ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। क्योंकि हमने कई कंपटीशन एग्ज़ाम्स के तो देखे हैं कि लाइव वीडियोस चलते हैं और चैनल्स पे, लेकिन इस लेवल पे मैंने कहीं नहीं देखा। Okay, so that is why it is really important, because we have to share whatever we are learning through this platform, and we have to tell our friends from school, from our relatives. We have to tell about the Just Tutor live classes which goes on about maths and science for class 1st to 10th every day. And one more thing, that if you want you can comment down in the comment section about any problem that you have regarding this topic or any other topic, and we will be happy to assist you to tell you about the topic in person. You can even book free trial classes. For that you just have to go to the website justtutors.com and everything will be there. So this is the thing that I would ask, I was telling you. So for today's session I think this is it. Let us just divide whatever we have learned. We have learned uh, uh, closure property. What was closure property? So closure property was that when you multiply two whole numbers or when you add two whole numbers, the result is also always a whole number. Okay, that means for example 6 times 7 is 42, 6 multiplied or 6 into 7 is 42, and 6 add 7 is 30. In both the cases both of them are whole numbers, so it is really easy for us to understand. The next property was commutative property. Commutative property means it doesn't matter whether you add 2 add 3 first or 3 add 2. If you are adding 2 and 3 or 3 and 2, it doesn't matter. The thing is you are adding the same number and answer will always remain the same. The third one was, I think it was associative property. So whether you multiply, it was related to more than two numbers, like two whole numbers like 1 2 and 3. So it doesn't matter whether you add 1 and 2 and then 3, or 1 and 3 and then 2, or 1 and uh, or whatever. Okay, so it is always the same. The next one was distributed property. Distributive, that means we can either multiply 2 by 3 and then 3 by 2, or 3 by 3 by 3 by 2, and so on. So this was it. So this was for the today's session. Okay, so do your homework and bye bye.